हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल लर्न विथ एपी में। इस चैनल में आपको मिलेगा अलग अलग विषयों पर मल्टी चॉइस क्वेश्चन एकदम केबीसी की तरह। तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आता है तो लाइक जरूर करें। आपके कितने उत्तर सही हुए यह हमें कमेंट करके बताएं। इस वीडियो को अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। आपको और किसी टॉपिक पर ऐसे ही वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जाकर सजेस्ट करें। इस वीडियो को अपने दोस्तों के ग्रुप्स के साथ देखें और जाने कौन है सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट। तो आइए चलते हैं हमारे आज के क्विज की तरफ। Question number 1. Symbol on map that represent human and physical features on surface of Earth is classified as Option A legend, Option B grid, Option D 9, Option D both A and C. The correct answer is Option A legend. Question number 2. Which of the following is not the limitation of the globe? Option A maximum distortion is seen in the region around the poles. Option B represents Earth on the flat surface. Option C details are not given in the form of symbols. Option D can study the detail part of the Earth. The correct answer is Option D can study the detail part of the Earth. Question number 3. Boundaries between different states are shown in dash. Option A political map. Option B relief map. Option C vegetation. Option D commercial map. The correct answer is Option A political map. Question number 4. Usually top of the map indicates dash direction. Option A west. Option B north. Option A Mercury. Option D east. The correct answer is Option B north. Question number 5. In map light brown color is used to show Option A rainfall. Option B mountains. Option C rivers. Option D axis. The correct answer is Option B mountains. Question number 6. Which color is used to show water? Option A white. Option B blue. Option C green. Option D black. The correct answer is Option B blue. Question number 7. The globe shows dash of the Earth correctly. Option A length. Option B direction. Option C shape. Option D height.
The correct answer is option D, Mercury. Question number 8. Plan is the detail drawing of the dash drawn on a very large scale. Option A, sun. Option B, small area. Option C, large scale. Option B, moon. The correct answer is option B, small area. Question number 9. The relation between the distance and corresponding distance on the map and corresponding distance on the ground known as Option A, globe. Option A, legend. Option B, grid. Option B, Venus. The correct answer is option B, scale. Question number 1. Dash represents the curved surface areas of the whole world on a flat sheet of paper. Option A, length. Option B, globe. Option C, plan. Option A, legend. The correct answer is option A, map. इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए अभी तुरंत हमारे इस चैनल लर्न विद एपी को सब्सक्राइब करें। हमारा मनोबल बढ़ाए रखने के लिए इस वीडियो को लाइक करें। आपको और कौन कौन से टॉपिक पर ऐसे वीडियो चाहिए हमें कमेंट करके बताएं। इस वीडियो को अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड को शेयर करें और देखें किसको कितना नॉलेज है। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। थैंक यू।